Welcome back. I'm Uday Pratap Singh. You're joining us on NewsX. Our special series continues as a build-up to the big 22nd of January moment, the Pran Pratishtha of the Ram Mandir. Today, we will be focusing on the Mathura story. Remember, viewers, we're living at a time and a moment where we will see history being made. A major Hindu temple in North India is being inaugurated. All eyes, of course, will be and are on the consecration of the Ram Mandir in Ayodhya. Excitement is bubbling on ground as people flock from across the country to this temple town for the grand ceremony that will, of course, be held on the 22nd of January. The Aam Aadmi, the Prime Minister, industrialists, celebrities, they will all be there on that auspicious occasion. But even as we celebrate this momentous occasion of the building of a grand temple at the birthplace of Lord Ram in Ayodhya, we're also going to be taking a moment to look at another temple town in India today, that is Mathura. Mathura, also in Uttar Pradesh, is a very important pilgrimage spot also for Hindus. Standing on the banks of the Yamuna River, Mathura is of course well known as Lord Krishna's abode. It's the birthplace of Lord Krishna as well as the place where he spent his childhood, his adolescence and also parts of his adulthood. Mathura's fame stretches millennia, with travelers like Megasthenes from Greece recording its grandeur under the name of Mathura in the 3rd century BC. Centuries later, the Mahmud of Ghazni sacked Mathura in 1018 CE, and his court historian Ul-Atbi records the Mahmud remarking that if any should wish to construct a building equal to this, he would not be able to do it without expending 100,000 red dinars. And it would occupy 200 years, even though the most experienced and able workmen were employed, quote unquote. That is what he said reportedly at that time. But in his sack of Mathura, Ghazni demolished the grand temple of Mathura. The temple was subsequently, though, rebuilt in 1150 CE. This is described as a brilliantly white temple touching the clouds, and this grand temple survived till the conquest of Qutubuddin Aibak, and also then later Firoz Shah Tughlaq of the Delhi Sultanates. Historians also record the sacking of Mathura by Sikandar Lodi, who left the temple at Katra entirely ruined. The later Middle Ages also hold significance for this temple town, and when we are discussing about the history of Mathura, why? Well, because the Portuguese traveller Father Antonio Monserrat records the temples of Mathura in ruins in 1580 to 82. Records also state that a Bundela king spent 33 lakh rupees in rebuilding the Keshav Deva temple in Mathura, only for Aurangzeb's wave of demolition to reach the city in the late 1600s. Once again, a sacking of Mathura was witnessed then. The grand temple at Mathura, held by historians to be the biggest of all in the Krishna circuit, was demolished by Aurangzeb in the year 1670. And the Shahi Eidgah Masjid, as it still stands today, was built in its place. The Mughals fell into decline after Aurangzeb's rule, and the British effectively took over around the 1700s. Mathura then came under British control in 1804, and the land of Lord Krishna's birth with the Shahi Eidgah Mosque was purchased by Raja Patnimal of Banaras. While the Raja could not build the temple himself, his descendants kept all 13.37 acres of land intact in hopes of one day accomplishing his dream. On the 7th of February 1944, politician and educationist Madan Mohan Malviya acquired the land from one of Raja Patnimal's descendants, Rai Krishnadas. The land was purchased at the cost of 13,000 rupees after noted educationist Madan Mohan Malviya enlisted the industrialist Jugal Kishore Birla to buy the land. Now, to set the grounds for this telecast, let's quickly show you the premises as they exist today with the help of some images. So let's quickly show you what the temple complex and that entire area, of course, looks like right now. Well, this is a map which is showing you that part of Mathura, where you can see first on the top left of your screens the Keshav Dev Rao temple. Remember, we already told you about the Raja that built that. You can also see over here the Shahi Eidgah Mosque that, of course, was built at a spot, at a place where the temple originally stood.
That's of course on the right of your screens. Now just adjoining that, as you can see right below, is the Krishna Janmsthal temple. This is the Krishna Janmabhoomi that is often spoke about. In fact, there's a case also in court. The Krishna Janmsthal temple is right here, and there is the Potra Kund. So that is the Potra Kund that is just a bit away from the Krishna Janmsthal temple, although of course still in the same vicinity. So those of course are all the spots. That is the map, which of course shows you very clearly about the area we will of course be talking about, where this entire devastation, destruction and rebuilding of course has been taking place. And before we speak to some of the families who have helped build the current iteration of the temple, let's show you a bit more about what things look like today. My colleague Veer has fired this ground report from Mathura. Take a look at what the Krishna Janmabhoomi temple looks like. इस समय मेरी मौजूदगी मथुरा के भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान पर। ये वही स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और यही अनेकों लीलाएं भगवान कृष्ण ने की। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। यहाँ नज़दीक ही साई ईदगाह मस्जिद भी यही है। तो इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हैं यहाँ के दिनेश शर्मा, जानकारी करते हैं। जी शर्मा जी, ये बताएं कि भगवान कृष्ण के गर्भगृह क्या क्या यहाँ महत्व है, कौन कौन सी लीलाएं भगवान कृष्ण ने यहाँ की हैं? देखिए, यहाँ पहले कंस का कारागार था और कंस के कारागार की 7वीं कोठरी में हमारे कान्हा का जन्म हुआ था। यहाँ पर पूरा विश्व जानता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। ये वही जन्म स्थान है जिस पर मस्जिद और मंदिर की लड़ाई चल रही है। इस कंस के कारागार को तोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के प्रपुत्र ने यहाँ एक विशाल मंदिर बनवाया भगवान श्री कृष्ण का। उसमें 16 फीट ऊंची भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा थी और वो अष्ट धातुओं से जड़ित थी। उसमें हीरा जवाहर जड़ित थे। ये इतनी बेशकीमती मूर्ति थी, इतना बड़ा मंदिर था कि इसकी गुम्बद को आगरा से देखा जा सकता था उस समय। तो 1017 में महमूद गजनवी आया, उसने इस विशाल मंदिर को देख करके वो अचंभे में रह गया कि इतना बड़ा बिल्डिंग कैसे तैयार हुई है। तो इस मंदिर को उसने 16 दिन तक लूटा। सभी सोना चांदी हीरा जवाहर वो अपना ले गया और ले करके मंदिर को उसने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में भी हिंदू राजाओं ने लगभग 90 साल बाद उसको पुनः बनवाया। फिर 1250 में फिरोज तुगलक का शासनकाल आया, उसमें फिर इस मंदिर को तोड़ दिया गया और तोड़ने के बाद में ज़मीन को समतल कर दिया गया। उसके बाद में हिंदुओं का राजाओं का शासन आया, फिर हिंदू राजाओं ने उसको मंदिर को पुनः बनवाया। फिर 1490 में सिकंदर लोदी का शासनकाल आया, तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में भी इस मंदिर को तोड़ दिया गया और तोड़ करके ज़मीन को समतल कर दिया गया और जो मंदिर की मूर्तियां थी उनको लूट लिया गया। तो इस मंदिर को, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को मुगल शासकों द्वारा कई बार तोड़ा गया और कई बार हिंदू राजाओं ने इसको बनाया। मुगल शासक मंदिर तोड़ते गए और हिंदू राजा मंदिर बनाते गए, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद में 1670 में इस मंदिर को औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया और तोड़ करके एक उसने विशाल चबूतरा बनवाया। उसने मंदिर के मलबे को इकट्ठा किया और पूरे मलबे को एक समतल करके चबूतरा बना के उस पर एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, जिसको हम कथित ईदगाह मस्जिद कहते हैं। तो इस गर्भगृह का महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण का जन्म यहीं हुआ था। ये वही जन्म स्थान है जो उस समय कंस ने हमारे कान्हा का वध करने का प्रयास किया, लेकिन वो वध नहीं कर पाए। उन्होंने उनके भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद में यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो ये जन्म स्थान है, जन्म स्थान को नहीं बदला जा सकता। आदमी मकान बदल देगा, स्थान बदलेगा, लेकिन जन्म स्थान नहीं बदला जाता। इसलिए हमारे कान्हा का जन्म स्थान ये प्राचीन है। मुगल शासक तो बहुत बाद में आए। तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, जन्मभूमि में कितने खंडों में ये बनी हुई है? भागवत भवन बताते हैं और कान्हा का गर्भगृह यहाँ बताते हैं। किस किस तरीके से यहाँ बनी? देखिए, कंस की जेल में 7 कोठरी थी, 7 कमरे थे। तो पहले 3 कमरे तो हमारे जन्मभूमि मंदिर के कब्जे में हैं और लास्ट के 4 कमरे ईदगाह मस्जिद के कब्जे में। श्री कृष्ण जन्म स्थान के कब्जे में जो है, जो आज भगवान यहाँ विराजमान है, वो कौन कौन सी जगह हैं? देखिए, जो मस्जिद बनी हुई है वो लगभग 2.25 एकड़ जगह में बनी हुई है और भगवान कृष्ण का जो दरबार है, जो मंदिर है, वो लगभग 10 एकड़ में है। तो इन्होंने हमारे 2.25 एकड़ जगह को, जहाँ मंदिर का मूल गर्भगृह था, जहाँ हमारे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, उस जगह पे औरंगजेब द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था। उसी अवैध कब्जे पे इन्होंने मस्जिद बना रखी है।
तो बिल्कुल आप सुन रहे थे दिनेश शर्मा जी को, भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूरी जानकारी उन्होंने दी है। तो भगवान कृष्ण का जो जन्म स्थान बना है वो करीब 11 एकड़ में बना हुआ है। 2.25 एकड़ की जो भूमि है वो शाही ईदगाह मस्जिद के कब्जे में है। और इस अगर बात करें तो यहाँ भागवत भवन, भगवान कृष्ण का गर्भगृह और आदि जो स्थान है वो आज भी यहाँ बने हुए हैं। वीर नारायण शर्मा, NewsX, मथुरा। That was a brief introduction to the Krishna Janmasthal temple and its long history. But now let's also introduce a special guest who's joining us. We are being joined now live by Justice Giridhar Malviya. He's the grandson of Pandit Madan Mohan Malviya, a pivotal figure in the building of the Krishna Janmasthal temple. We of course told you his story earlier on the show. Justice Malviya, thank you very much for being with us today on the program. Could you tell us a bit more about your grandfather, noted politician and educationist Pandit Madan Mohan Malviya, and also his contributions in rebuilding the Mathura Krishna Janmasthal temple and what really prompted him to do so, sir? You see, Mahamana Malviya ji, as he was commonly called, he was a believer in ancient India's culture, and therefore even his dress, etc., were truly Indian. He never wore any pant or coat or suit. It was purely Indian clothes that he used to wear, and his outlook was also the same. He believed in Hinduism and Hindu culture, and his Hinduism was not in any manner antagonistic to any other religion. Sarva Dharma Sambhav, that is what he used to believe. What was the purpose of acquiring land, Justice Malviya, for rebuilding the Krishna temple? The place was known as the Krishna Janmabhoomi. But where is Krishna Janmabhoomi? Some people thought it is here at A place, some people thought it is at B place. Therefore, to finish that controversy, he acquired a particular piece of land and made it the Krishna Janmabhoomi so that the temple could come up there. Tell us a bit more then, sir, about the legacy of Pandit Madan Mohan Malviya and the freedom struggle. We would want to know more about that story as well, that we've read often in our school textbooks. He was connected with the freedom struggle right from his childhood. He had gone actually with Hume, Alan Octavian Hume, in 1885 to Calcutta to attend the National Congress. Since that day, he was connected with Congress and the Congress movement for independence of India. Yes. Also, you know, another institution that he helped found was the BHU. What was his thought, Justice Malviya, behind founding the Banaras Hindu University? That's a very good question. He believed in real heritage of India, and his Hindu was actually the synonymous for Hindu culture. Therefore, he wanted a university where every language, be it Urdu, be it Arabic, be it Hindi, be it Sanskrit, that should be taught, and every technical subject, be it engineering, science, technology, that should be taught. Therefore, he wanted that one university where every subject could be taught should be there, and its basic should be Indian culture, oriented in Indian culture. He also founded the Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha, sir, and worked closely with Veer Savarkar as well. Could you shed a bit more light on his work? Well, I don't know whether he worked with Savarkar or whether he was much more senior to him, but yes, Hindu Mahasabha again, he did not want the Hindu Mahasabha to be known as it is known today. For him, Hindu Mahasabha was a piece of institution where
everything that is related to Hinduism, it could be really brought to the notice of the people of India so that they would know as to what was the Hindu culture, what was the Hindu tradition, and where did the India really lead the world to say that whatever India does is what the world should do. Justice Malviya, what are your views on the controversy surrounding the Shahi Eidgah Krishna Janmabhoomi dispute? The matter now, in fact, has landed up in court. The controversy is now no longer there. In the beginning, no one wanted that the Krishna Janmabhoomi should be where it is now. And therefore, most people thought that no, Eidgah is there, and therefore the Krishna Janmabhoomi cannot be near the Eidgah. But he resolved it. He said no, even if Eidgah is there, then Krishna Janmabhoomi is here, and it is not impossible that two separate institutions can be adjacent to each other. Therefore, he made a specific place as the Krishna Janmabhoomi and made it a trust. Now, also, the importance of the Krishna Janmabhoomi really stands out in Hinduism as well, sir. What is its significance according to in Hinduism, and why it is in fact called one of the most three revered sites of Hindu faith? You see, Krishna, as we know, he is an ideal god. Ram and Krishna, they are normally known as the gods in India genus. If you call anywhere Sri Krishna, then the people there would know that, well, it is not any Sri Krishna person, but it is Lord Sri Krishna. Therefore, to make a place connected with Lord Sri Krishna, he identified a place and named it Sri Krishna Janmabhoomi. How do you view also the mega celebrations? Now, I'd like to ask you, in a build-up to 22nd January, Justice Malviya, the inauguration of the Ayodhya Ram Mandir now is around the corner. How do you view the mega build-up and the celebrations planned as well, sir? Well, it is going to be really very good because Ayodhya Ram Mandir is again a milestone in the history of this country. And since it is going to be now inaugurated there, therefore, all the importance that is given to it is absolutely justified, and it should be that way alone. Now, there are many who are constantly prophesizing a Muslim genocide, though, in India as well. There are many who tell the world that Muslims in India are living under fear, are not safe. Why do you believe this is being said? Who is spreading this narrative, both outside and within the country? Well, I have not heard about this. I don't think that any person, any sober person, is against the Muslims in this country. Muslims are as welcome here as any other community. Well, Hinduism naturally is the primary religion, and therefore Hindus have the upper hand. Therefore, if anything that goes contrary to Hindu idealism, that naturally will not be accepted. But otherwise, whether it is Christianism, whether it is Sufism, or whatever, it all is here, and it is all existing. Sarva Dharma Sambhav, that is coexistence, is the philosophy, and it is being worked here. The word Ram Rajya has also become controversial, sir. Some people mistake it for Hindu imposition. Why do you believe this is being spoken by some? Do you believe there's a misconception amongst people about what Ram Rajya is, about the Ramayana, about Lord Ram? Well, you see, Rama are different. Ram Rajya is different. Ram Rajya is the best way to govern a country. Therefore, everything that was good was concept of Ram Rajya. Now, therefore, any person, he cannot be opposed to Ram Rajya. That is the governance of country. But some people naturally, if they don't believe in idols, they would not accept Ram. And if some people who do not actually very much congenial to the fact that Ram should also be known as a god in India, as is Christ known, then naturally they would not
like it that way. Do you believe the world has much to learn from Ramayana as well about good governance, which you were just referring to, about morals and about ethics, Justice Malviya? I would think so, absolutely. Because whatever is Ram Rajya, whatever we read, whatever we hear, whatever we learn, it's all something which is absolutely good. There is nothing which in the concept of Ram Rajya which we may say is not really correct. Therefore, it's absolutely true that it should be, the governance should be the way the Ram Rajya was. All right. My final question to you once again is on BHU that we spoke about a short while back. What, according to you, does BHU stand for? Well, Banaras Hindu University, as it is known, the BHU, is again a place where every religious student is permitted to come to study. However, the background is Indian culture. The Banaras Hindu University stands for basically the Indian culture, whatever is the Indian way of life that is being adopted there. People believe in it and they want that everything that is done here should be known as the ideal way of living. Thank you very much, Justice Giridhar Malviya, for joining us on NewsX. Grandson of Pandit Madan Mohan Malviya speaking with us there. In fact, we have with us now another very special guest also joining us, a descendant of one of the most important families connected to the Christian Janmsthal temple, the Dalmia family. Well, the Dalmia family were given the charge of the building of the temple, and they carried out their duty as though charged by God himself. Jai Dayal Dalmia, the man who actually built the temple complex, sat on the Sri Krishna Janmsthan Seva Sansthan Trust for the better part of 2 decades. Today we are being joined by Vinayak Dalmia, noted entrepreneur and former advisor to the Government of India, and of course he's a descendant of J.D. Dalmia. Welcome, thank you so much for being with us on the show, Vinayak. What is the family story, Vinayak, of how he got involved with the construction of a temple though? From the beginning, my family and my grandfather in particular believed in India's civilizational renaissance, in doing tangible, long-lasting things for the nation and for the community. Initially, the piece of land on which the temple was constructed was acquired by a group of people which included the educationist and activist Madan Mohan Malviya, along with Jugal Kishore Birla. And from there, my grandfather and family volunteered to do the construction on the site. And the sort of construction was inaugurated around 1958 by the activist Hanuman Prasad Podar. And that's how the family got involved, by volunteering to do the construction on the piece of land. And you know, for the temple, how have you and the family been involved in supporting it as well over the decades? Have you personally visited? Over the years, the family has continued to contribute to the maintenance and upkeep. And now the onus is on us, the next generation, to carry that torch forward, and we fully intend to. And obviously, yes, we visit very often, as recently as last year. It is part of our culture, it is part of who we are, and it is as proud Indians that we do so. And not only Mathura, we regularly visit all the other divine sites. For example, very recently, I was in Salasar in Rajasthan. You know, that's a great story, of course, about your family's connect with the temple, but clearly of the Mathura temple. But what's the lesson you believe there is there for others? You know, clearly modern day entrepreneurs and philanthropists should, do you believe, start getting involved in temple construction or mosque construction? I think it's an excellent question, and the principal lesson to be drawn for all modern day entrepreneurs, whether they are first generation entrepreneurs or whether they are second or third generation entrepreneurs, is that their entrepreneurial journey has to coexist with nation building. That you have to exist in national interest and you have to pursue profit with a sense of purpose. I can speak for myself. That's the reason of my existence, and that's my true North Star. To, in my small way, do things for our glorious nation and for reviving our very unique civilization. And if you, as an entrepreneur, if you exist with that sense of national pride and to restore our civilizational greatness,
I think that's the single most important lesson that today's and the next generation of entrepreneurs ought to learn from these previous great giants. You know, and beyond just temples, philanthropy is core to culture, arts, educational institutions, Vinayak, isn't it? From the DCM Srirams to the Shiv Nadars to the Carnegies and the Guggenheims. Do you believe that we should be hopeful of a revival in philanthropic efforts in all fields? Absolutely. I believe these are very encouraging signs and only the tip of the iceberg. In the next, 5 to 10 years, we will see many more families in India come together to contribute to all facets of society, from education to our scientific endeavors, to restoring our cultural lineage and history. On many fronts, you will see many families, old and new, come together in national interest. Like I said, if you pursue your profit with purpose and you're able to give back, that is a wonderful thing that you can do as an entrepreneur. And I see many more such endeavors in the next 5 to 10 years. Right. Now, we've also seen recently the Ambani Cultural Centre in Mumbai be inaugurated. We do know that Sudha Murthy is also involved in many, many projects. Is this a good trend, do you believe? Yes. And as I said, I hope to see many more such long-lasting, high-impact national projects. I predict that within the next 10 years, you will see Indian philanthropy to become a global name to reckon with, where brand names like Carnegie, Rothschild will get replaced with potent Indian names. This also, gives employment, doesn't it? And opportunities to sculptors, artists, historians, and in a way is creating a new generation of people who are taking up these fields. Also at a time, though, when we see a lot of traditional art forms under threat, existentially. I think that's an excellent question, because preservation and revival of some art forms is the need of the hour. In fact, you're seeing many now families raise their hand to contribute. If I remember correctly, even part of the Ambani project that you referred to focuses on that, which is to give a source of livelihood to local artisans and to preserve and protect them and to give them global avenues. Okay. So I think, like I said, there are many art forms in India, and some are, there is a risk of some of them becoming extinct if they don't get a source of livelihood, they don't get a global platform, and they don't get a constant source of support. And therefore, it is an absolute need of the hour, because India is so rich and diverse in terms of its art forms. And art has many interpretations and many manifestations. Unlike most other countries, we have probably the most diverse and dense types of arts and artists. And it is up to philanthropists to come up, raise their hand to preserve and protect them. And like I mentioned, some of the projects that you referred to, for example, the Ambani project is a perfect step in that direction. And I predict many more such efforts going forward to preserve local artists and local artisans. Okay. What can we hope for in terms of cultural renaissance in India going ahead? I think for the first time, I'm seeing as a young Indian, a sense of restoration of national pride, a sense of recognition of the greatness of our culture. Bharat as a civilization was always incredible. And now it is time for it to also become credible globally, and for the next generation who are going to be the torch bearers, to take that sense of pride, take that sense of ownership and take it forward. So I see a tremendous renaissance in our cultural heritage and a sense of national pride, which will start with obviously young Indians, but will also percolate globally. And you can argue this will be another form of India's soft power going into the next decade. Yes, but what's the message, you'll give, Vinayak, to modern day entrepreneurs coming from an industrial family, the people now building the unicorns, and how they should go about institutional building as well through philanthropy and create things that will serve the country for generations? My hope and my message to both, second and third generation entrepreneurs, as well as first generation ones who are building fantastic large companies,
is develop multi-generational long-term thinking. The people you mentioned, like my grandfather, that's the one thing they had. They had the ability to think long and deep, and they had the ability to sow the seeds to build things which will outlast them. So sow seeds that will build things that will A, outlast you, and B, leave a permanent mark on your country, on your civilization, and on your community. Build things in essence that will matter 100 years after you are gone. And by the way, this goes beyond philanthropy. It goes to the very heart of business building. What kind of businesses are you building, and how are you building them? And then what are you doing with the profits of that business? If you think of business, and if you think of the profits of business as some sort of a prasad, then what are you doing with that prasad, and what are you doing to give back with that profit? So I think essentially think long-term and think in national interest would be my one message to the next generation of entrepreneurs. Final question, Vinayak, to you. We see tourism, to churches, from the Jerusalem and the Vatican to many other places. How much tourism potential do you believe can be unlocked through revival of our traditional sites in India? And I again predict a multiplier effect on the economy and on tourism, both the international as well as domestic tourism. You're already going to see that with the Ram Janmabhoomi and Ayodhya, and you're going to see that with as we restore and preserve other religious sites in the country, that there'll be an influx of tourism which will have a massive impact on the local economy and on India standing in the world, right? Other nations have, or other civilizations have a single Vatican that they hold dear. India is unique that it has multiple such Vaticans that we have in our country and within our lands. And preservation and restoration of all of them will have a multiplier effect on tourism and on the local community. All right. Vinayak Dalmia, thank you so much for being with us today on the broadcast and joining us, speaking with us there, taking us through, of course, your grandfather's journey and involvement with that temple in Mathura. Thank you so much for joining us. Ramakrishna Dalmia's grandson Vinayak there speaking with us. Okay, let's take you back to Mathura. We were telling you about the Krishna Janmabhoomi temple. We showed you that. But my colleague has also filed reports from the Keshav Dev temple, which was built by the Dalmia family, as well as the Potra Kund. Remember, we showed you that spot as well on a map earlier. मैं इस समय मौजूद हूँ मथुरा के कटरा केशव देव मंदिर में। एक कभी कंस का कारागार हुआ करता था, तो भगवान कृष्ण ने इसी में यहाँ जन्म लिया। ये केशव देव, कटरा केशव देव का मंदिर है। आज चलते हैं, दिखाएंगे। भगवान केशव देव यहाँ विराजमान है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ यहाँ सेवायत हैं। क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम यज्ञपाल गोस्वामी है। इस मंदिर के सेवायत हैं। और ये मंदिर प्राचीन केशव देव जी का मंदिर है। और ये मंदिर जो है मस्जिद वाले स्थान पर ही स्थापित था, जिसको औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। तो क्योंकि पहले प्राचीन के समय में जो है अंग्रेजों का ज़माना था, उससे पहले मुगलों का ज़माना था, तो मुगल शासक जो है हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया करते थे। तो इस मंदिर को जो है मराठा सरदारों ने एक घरनुमा बनाया था, जिससे मुस्लिम शासकों को ये मालूम ना पड़े कि यहाँ पर मंदिर स्थापित है। अब तो इसमें काफ़ी संशोधन हो गया है, काफ़ी जीर्ण अवस्था में हो गया था ये। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और अनादिकाल से इसका चला आ रहा है। त्रेता युग में भगवान राम के जो छोटे भाई थे भरत जी, उन्होंने लबड़ासुर नामक राक्षस को मारा था यहाँ पर। फिर भगवान राम के पास में जब वो गए वापस लौट के, तो उन्होंने कहा तुम मथुरा में ही राज्य करो। तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर केशव देव नाम का जो केशव देव जी की जो ठाकुर जी की प्रतिमा है, वो मेरा ही स्वरूप है, तो वहाँ जाकर उनकी जो है सेवा कीजिए। तो उन्होंने वहाँ पर राज किया है। उसके बाद में द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने इसी स्थान पर जन्म लिया था, जिसको औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। उसके बाद में इस मंदिर को यहाँ पर स्थापित किया था घरनुमा। ये मंदिर जो था पहले किस जगह बना हुआ था? ये मस्जिद की स्थान पर बना हुआ था, ये प्राचीन काल में। और इतना विशाल मंदिर था कि इसकी दीपक की जो है दिल्ली और आगरा से दिखती थी, लेकिन औरंगजेब के शासन में इसको तोड़वा दिया गया और उसके स्थान पर ही उसके छोटे से चबूतरे पर मस्जिद को बनवा दिया गया। आप यहाँ सुन रहे थे कटरा केशव देव मंदिर के जो सेवायत मैन थे, इन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण इसी जगह जब जन्म लिया था, कंस का ये कारागार हुआ करता था। जो कटरा केशव देव का जो मूल जो मंदिर था, वो जो साई ईदगाह मस्जिद जहाँ बनी है, उस जगह पे पहले ये मंदिर हुआ करता था। लेकिन औरंगजेब जो शासक था, उसने कटरा केशव देव मंदिर को तोड़वा करके खंड बंद कर दिया। उसके बाद जो त्रेता युग में भगवान
राम के जो छोटे भाई हैं भरत, उनके द्वारा मंदिर की स्थापना कराई गई। और यहाँ जब कटरा केशव देव की मूर्ति स्थापित की गई तो आज भी यहाँ भगवान कटरा केशव देव जो हैं, आप देख सकते हैं ये मंदिर है, ये भगवान केशव देव इसी गर्भगृह में यहाँ विराजमान है। देश और दुनिया से यहाँ आज भी जो श्रद्धालु भक्त हैं वो बड़ी आस्था के साथ कटरा केशव के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। वीर नारायण शर्मा, न्यूज एक्स, मथुरा। मैं इस समय मौजूद हूँ भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान के प्रवेश द्वार पर। तो यहाँ से प्रवेश द्वार से आप देखें बिल्कुल नजदीक 100 मीटर की दूरी पे यहाँ पोतरा कुंड है। जो पोतरा कुंड है, ये पोतरा कुंड यहाँ आप देख सकते हैं, ये पोतरा कुंड का जो महत्व है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के बाद माँ देवकी ने भगवान श्री कृष्ण के जो बाल अवस्था में जो जिन्हें ब्रज में फरुआ कहा जाता है, ये जो वस्त्र होते हैं उन्हें धोने का जो देवकी माँ ने धोया था वो यही कुंड है, पोतरा कुंड में। आप देख सकते तस्वीरों में साफ है जो पोतरा कुंड यहाँ बना हुआ है। इसी कुंड में माँ देवकी ने भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ के जो कपड़े थे वो इसमें धोया करते थे। और इस कुंड का जो महत्व है वो भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। तो मथुरा में जब किसी भी घर में जब बाल अवस्था में बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद उसके परिजन जो हैं, उसकी माँ जो है, इसी कुंड में आज भी जो छोटे बच्चे के जो वस्त्र होते हैं उन्हें धोने के यहाँ पहुँचती हैं। वीर नारायण शर्मा, न्यूज एक्स, मथुरा। So you saw those ground reports, of course, again from the other sites in Mathura, the other pilgrimage places, the other pilgrimage spots, but also the spots which have seen atrocities committed, then rebuilding happen over the years by industrialists, by royal families, and by many other philanthropists. Okay, let's tell you more now about Mathura. Mathura has drawn devotees to the city for millennia. Today, of course, is no exception. People flock to the city to pay their respects to Lord Krishna at his place of birth. This has drawn businesses as well to come to the Krishna Janmasthan. We have with us now another very special guest. Kapil Sharma is joining us live. He is General Secretary of the Shri Krishna Janmasthan Seva Sansthan Trust. He, of course, is joining us for a conversation on the temple and also how it affects and impacts the city of Mathura. Kapil Sharma ji, welcome to the show. Thank you so much for being with us today. The Krishna Mandir, sir, has had a long history. Some of the history we've, of course, told our viewers as well. But I want you as well to tell our viewers more about the struggles involved in the creation of the Mandir, as we've seen today in our ground report earlier, as you see, because you are, of course, a trustee, and as devotees see when they flock to Mathura. देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज से लगभग 5248 वर्ष पूर्व हुआ था। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके एक रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जन्म हुआ जी। उस अजन्मे ने जन्म लिया था मथुरा, जिसको आज हम कृष्ण जन्मभूमि के रूप से जानते हैं। वहाँ पर प्रथम मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन प्रपौत्र ब्रजनाभ जी ने कराया था, जो बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर था। कालांतर में अनेकों बार मंदिरों का निर्माण हुआ, विध्वंस हुआ, रेनोवेशन हुआ, जीर्णोद्धार हुआ। जो प्रमाणिक रूप से आखिरी मंदिर था वो ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला जी ने वहाँ पर बनवाया था जहांगीर के कार्यकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, जिसको 1668 में औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ा। उसकी सामग्री से उसी स्थान पर ईदगाह का निर्माण कराया। और ऐसे भी फरमान है उनके, जिसमें जो भगवान श्री कृष्ण की सालिग्राम शिला से बनी हुई दिव्य मूर्ति थी, उसको आगरा की मस्जिद की सीढ़ियों में लगवा दिया। तो वो जो मस्जिद, जो ईदगाह है, कथित ईदगाह है, वो वास्तव में हमारे ठाकुर श्री केशव देव जी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर बनी हुई है। और वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, देखिए, एक होता है कि किसी के कोई नुकसान किया, एक होता है कि अपमानित करने के लिए हमारे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य और भव्य मंदिर को तो तोड़ा ही, साथ में उस स्थान पर ईदगाह बनाकर करोड़ों करोड़ कृष्ण भक्तों को, सनातन धर्मावलंबियों को अपमानित करने की साजिश भी
ऐसी आक्रांताओं और लुटेरों की रही है। जी, मुख्य स्थान क्या हैं उस इलाके में, उस क्षेत्र में, उस एरिया में? कपिल जी, व्हाट आर द की साइट्स देयर इन दैट कृष्ण जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स, और उनके उन सब का महत्व क्या है? व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस? भगवान श्री कृष्ण की पवित्र जन्मभूमि के दर्शन के लिए जी, हमारे राष्ट्र की विभूति गोलोकवासी पंडित मदन मोहन मालवीय जी पधारे। जब उन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थान के परिसर को देखा तो उनकी आत्मा रुदन करने लगी। वहाँ पर ईदगाह के रूप में एक ढांचा खड़ा हुआ था जिसमें कभी कोई नमाज वगैरह उस समय नहीं होती थी। मुस्लिमों की भैंसें गाय बंधी हुई थी, झोंपड़ियाँ बनी हुई थी। तो उस स्थान को देखकर पंडित मदन मोहन मालवीय जी को बहुत हार्दिक वेदना हुई। उन्होंने संत गोलोकवासी संत जुगल किशोर बिरला जी को निवेदन किया, परामर्श दिया कि इस स्थान पर भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जब उस जमीन के बारे में जानकारी की गई तो पता लगा कि ये ज़मीन ईस्ट इंडिया कंपनी से बनारस के एक राजा पटनीमल जी ने नीलामी में खरीदी थी। जी, राजा पटनीमल के वंशजों से नाम मात्र के धनराशि को देकर जो उन पे उस स्थान को बचाने के लिए जो मुकदमे चल रहे थे उनका कर्जा हो गया था, उस धनराशि को देकर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उस जमीन का बैनामा रजिस्ट्री कराई। बाद में 1951 में जब ट्रस्ट का निर्माण हुआ, ट्रस्ट बनाया गया श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, तो उसमें यह जमीन सन्निहित हो गई। तो ये 13.36 एकड़ की ज़मीन है जिसमें ये कथित ईदगाह भी शामिल है। ये इसका रेवेन्यू में, सरकारी रिकॉर्डों में हर जगह श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का मालिकाना हक है। इसके ऊपर जितने भी टैक्स आदि हैं उसका भुगतान भी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ही कर रहा है। तो उस स्थान पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस स्थान को बचाया, सेठ जुगल किशोर बिरला जी ने इस स्थान को बचाया और ट्रस्ट ने बाद में धीरे धीरे यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू किए। आज जिस भव्य और दिव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि के आप दर्शन कर रहे हैं वो बाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी बने गोलोकवासी संत जयदयाल जी डालमिया। जयदयाल जी डालमिया ने अथक प्रयत्न करके, धन की व्यवस्था करके न सिर्फ जन्मभूमि का जीर्णोद्धार कराया, वहाँ पर दिव्य और भव्य भागवत भवन का भी निर्माण उन्हीं के देखरेख में हुआ। उनके उपरांत श्री गोलोकवासी विष्णुहरि डालमिया जी कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी बने और उन्होंने भी अपना संपूर्ण सामर्थ्य से भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के उत्थान जीर्णोद्धार के लिए प्रयत्न किया। और आपको जानकारी होगी कि राम जन्मभूमि आंदोलन के समय जब कथित बाबरी का ढांचा गिराया गया था, उस समय श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के जो मैनेजिंग ट्रस्टी थे गोलोकवासी विष्णुहरि डालमिया जी, वो विश्व हिंदू परिषद के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जी, कई परिवारों का, जैसे आप बता रहे थे, योगदान रहा है। How do you view the contributions of the several families that ultimately resulted in the construction of the मंदिर in मथुरा? उन सबका योगदान रहा है, इस वजह से आज वहाँ मंदिर है। नहीं तो जैसे आप बता रहे थे कि सैकड़ों साल पहले 2-3 बार जो मंदिर बने थे उनको तोड़े गए। देखिए, सभी का उल्लेख करना संभव नहीं है। कृष्ण जन्मभूमि की रक्षा के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने कार सेवा की। लेकिन हम अपने पूर्वजों के बलिदान पर कोई ना कोई पीढ़ी वहाँ पर निर्माण कार्य अवश्य देखती है। जैसे राम जन्मभूमि पर 550 साल में लाखों हमारे सनातनियों ने, राम भक्तों ने बलिदान दिया। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि अपने पूर्वजों के बलिदान के फलस्वरूप जो आज राम जन्मभूमि का स्वरूप बना है उसके हम दर्शन कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से
इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, उन सबको अशेष वंदन और नमन। और आज जो कृष्ण जन्मभूमि आप देख रहे हैं उसमें निश्चित रूप से पंडित मदन मोहन मालवीय जी, गोलोकवासी जुगल किशोर बिरला जी, गोलोकवासी जयदयाल जी डालमिया, गोलोकवासी श्री विष्णुहरि डालमिया जी के साथ साथ अनेकानेक महापुरुष हैं जिनका अगर मैं नाम का उल्लेख करूंगा तो समय का निश्चित रूप से अभाव हो जाएगा। इस सबसे सीख क्या है? What is the lesson that we can draw here for modern day entrepreneurs, also for philanthropists getting involved in temple construction or mosque construction, sir? देखिए, मंदिरों का धर्म की ध्वजा को साधक और उपासक ही उठा पाते हैं, शासक के बस का नहीं है। आज हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी जो शासक से बड़े उपासक और साधक हैं, आज उनका अथक प्रयत्न है, अथक प्रयास है कि आज हम राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य राम मंदिर के दर्शन करने के योग्य बने हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी वो शासक से पहले साधक और उपासक है। तो व्यवसायी जिसके हृदय में सनातन की भाव है, जिसके हृदय में राम कृष्ण और शिव हैं, वही इस प्रकार के पुण्य कार्यों में अपना योगदान दे पाते हैं। जिन लोगों ने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया, राम मंदिर के निर्माण में बाधाएं उत्पन्न की, कार सेवकों के रक्त से सरयू को लाल कर दिया, वह आज गिलानी से अपने अपने घरों में छुप के बैठे हुए हैं, प्रलाप कर रहे हैं। और जो सनातनी जिन्होंने बलिदान दिया राम जन्मभूमि के लिए, जिन्होंने आंदोलन किया, अनशन किया, वे आज अपने अपने घरों में, अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने हृदय में जगह जगह आज अयोध्या प्रकट हो रही है। आप देखेंगे कि 22 तारीख को, 22 जनवरी को भारतवर्ष के प्रत्येक सनातनी के हृदय में भगवान श्री राम श्री अयोध्या धाम का प्राकट्य होगा। जहाँ भी आप देखेंगे संपूर्ण भारतवर्ष जो ये ऋषि मुनियों की भूमि है, ये आपको जहाँ आप रहेंगे वही आपको अयोध्या के रूप में दर्शन देगी। जी, क्या आपको लगता है कि जो राम मंदिर है अयोध्या में जिसका निर्माण होने जा रहा है, क्या आपको लगता है इसका बड़ा असर पड़ेगा? Further interest will be generated because of this in the Ayodhya Kashi Mathura corridor. देखिए, अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का जो स्वरूप आया है, ये भारत की आत्मा को बल प्रदान करने वाला है। राष्ट्रवाद को सनातन से अलग करके नहीं दे सकते। राम कृष्ण और शिव ये भारत की आत्मा है। अगर इनको अलग कर देंगे तो ये भारत राष्ट्र आत्मा विहीन हो जाएगा। तो आज जो काशी का स्वरूप बना है, आज जो अयोध्या का स्वरूप बना है, ये हमारे भारत की संपन्नता के लिए मील का पत्थर साबित होगा। राम राज्य सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, इसकी तरफ हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और हम सब बड़े हृदय से आभारी हैं अपने प्रभु श्री राम का कि उन्होंने आज हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस पुण्य कार्य को सफल किया। और आप देखेंगे कि अयोध्या जो एक धार्मिक तीर्थ नहीं होगा मात्र, ये भारत की आत्मा को जागृत करने का एक अद्भुत तीर्थ बनेगा। और क्या क्या किया जा सकता है? What more can be done to boost the spiritual tourism prospects of मथुरा? क्योंकि बहुत पोटेंशियल है कपिल जी। देखिए, माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी और हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज निरंतर हमारे धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक तीर्थों के विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। हमारे पर्व त्योहारों को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। आज जब मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है
तो संपूर्ण वो जन्माष्टमी जो है मात्र कृष्ण जन्मभूमि के परिसर के अंदर नहीं होती, संपूर्ण व्रज में मनाई जा रही है। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ क्योंकि देव सत्ता चल रही है भारत में, उत्तर प्रदेश में दिव्य सत्ता चल रही है। तो इस दिव्य सत्ता में निरंतर तीर्थों और हमारी संस्कृति के विकास और उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे हैं। आज पर्यटन की दृष्टि से आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। वाराणसी में लगभग 7 करोड़ श्रद्धालु गए, मथुरा में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालु आए, और हमें विश्वास है कि अयोध्या में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएंगे। इतने श्रद्धालु, इतने यात्री बिना तीर्थों में सुविधा उपलब्ध कराए संभव कैसे थे? ये तो हम निश्चित रूप से अभिनंदन, वंदन, नमन करते हैं इस दिव्य और देव सत्ता का, जिन्होंने तीर्थों में इस प्रकार की सुविधाओं का विकास किया कि आज सनातन धर्मावलंबी हिंदू अपने तीर्थों में गर्व से जा रहे हैं, सुरक्षा की भावना के साथ में जा रहे हैं। उनको पता है कि वहाँ पर हमको जाएंगे तो आध्यात्मिक वातावरण मिलेगा, हम वहाँ जाएंगे तो सुविधाएं मिलेंगी, वहाँ जाएंगे तो जिस भावना को हम हृदय में लेके जा रहे हैं उसकी वहाँ पर पुष्टि होगी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो विकास कार्य हुआ है, ये जो मंदिर हम देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत अब बना है, और जो क्षेत्र उसके इर्द गिर्द हैं वो भी पूरी तरह से बदल रहे हैं। इस सब से लोगों पर क्या असर हुआ है? हाउ इज इट हेल्प द पीपल ऑफ मथुरा? उनका उठान कैसे हो पाया है? हाउ इज ऑल ऑफ दिस इम्पैक्टेड द लोकल पीपल देयर, जो स्थानीय लोग हैं मथुरा के? देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, अगर आप प्राचीन अर्थव्यवस्था की बात करें तो एक काल वह था जब मथुरा में मुद्रा के रूप में जवाहरात स्वीकार किए जाते थे, स्वर्ण सिक्के स्वीकार नहीं किए जाते थे। हमारी अर्थव्यवस्था में धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमारे धार्मिक क्षेत्र, तीर्थों का विकास होगा, धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, तो आप देखेंगे कि भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। आज मथुरा में यदि हम मंदिरों को अलग कर दें तो मथुरा की अर्थव्यवस्था है कहाँ? आज मथुरा में लाखों लाख जो निवासी हैं ब्रज के, वो मंदिरों पे आधारित कार्यों से ही तो जीविकोपार्जन कर रहे हैं। आज कोई भगवान की पोशाक बना रहा है, कोई पुष्प बंगला बना रहा है, कोई भगवान के आभूषण बना रहा है, कोई मालाएं बना रहा है, कोई गेस्ट हाउस बना रहा है। तो आज संपूर्ण हमारे भारत की इकोनॉमी, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था मंदिरों पे बहुत बड़े स्तर पे आधारित रही है। हमने हमेशा कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, ये निश्चित रूप से सही है, लेकिन हमारे भारत की अर्थव्यवस्था धर्म आधारित भी है। यदि धर्म का विकास होगा, धर्म का उत्थान होगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से ऊपर जाएगी और हमको कोई सोने की चिड़िया बनने से पुनः नहीं रोक सकता। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भारत जगत गुरु जब ही बनेगा जब हमारा आध्यात्मिक विकास होगा, हमारा धार्मिक विकास होगा, हमारा नैतिक विकास होगा, और हम जो है अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ेंगे। आगे का रास्ता क्या है कपिल जी? मेरा आखिरी सवाल आपसे, आगे का रास्ता क्या है? What further development of the Christian Janmabhoomi complex can be done? What must be the priority now? अब फोकस किस चीज़ पे होनी चाहिए, और क्या कुछ अभी बाकी है जो किया जा सकता है? देखिए, कृष्ण जन्मभूमि ये एक परिसर में हम सीमित करके नहीं दे सकते। संपूर्ण व्रज 84 कोस भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। उसके लिए हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी योजना पर कार्य शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास का गठन हो चुका है। उसके माध्यम से ब्रज 84 कोस में बहुत ही बड़े स्तर पर, बृहद स्तर पर विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि बहुत सुंदर स्वरूप में है। अब तो श्री कृष्ण जन्मभूमि का विस्तार होना है। प्रभु कृपा करेंगे और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर विस्तार के साथ साथ हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल अपने मूल जन्मभूमि पर, अपने मूल गर्भगृह में विराजमान होंगे
और यह जल्दी होगा ऐसा हमारा विश्वास भी है और भगवान से प्रार्थना भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल शर्मा हमारे संग जुड़ने के लिए। कपिल शर्मा joining us there, speaking with us, of course, General Secretary of the Shri Krishna Janmsthan Seva Sansthan Trust. Thank you very much, Kapil Sharma, for joining us. He's, of course, told us about how things can further improve and what really has been the history of that area of the temple, of course, and of course the family's contributions, but also more importantly how that has impacted the temple town of Mathura and the local people. In fact, my colleague has also sent this ground report on the business in and around the temple and what the impact of the temple itself is on the local people. Let's see it for ourselves in this next ground report. मैं समय मौजूद हूँ मथुरा भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान के समीप जो बाजार है। यहाँ कितनी पुरानी दुकानें हैं, इनसे बात करेंगे। मेरे साथ दुकानदार हैं। क्या लाभ भगवान कृष्ण जन्मस्थान के मंदिर से दुकानदारों को यहाँ मिल रहा है? भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है प्रदीप कुमार गोयल। भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान पे आप दुकान लगाए हैं जी। कितने दिनों से आप दुकान कर रहे हैं यहाँ? जी, ये दुकान है करीबन 20 सालों से। 20 सालों से दुकान कर रहे हैं। क्या मजबूती मंदिर से यहाँ मिल रही है? आर्थिक स्थिति कैसी रही है? देखिए, व्यवसाय कितना बढ़ा है, कितना कम हो रहा है? जब पहले बीजेपी नहीं थी तो नुकसान तो बहुत हुआ था, लेकिन अब जब से बीजेपी आई है तो मुनाफा भी बहुत है, तरक्की भी ज़्यादा है और हमारे जो व्यापारी हैं उनमें भी बहुत तरक्की हुई है। क्या क्या दुकान में सामान आप बेचते जी हैं? जी, देखिए, लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार है, झूले है, पालने है, मूर्ति है, ठाकुर जी का जितना भी श्रृंगार का आइटम है वो सब बेचते हैं हम। क्या बीजेपी आई है तब से यात्रियों का यहाँ आवागमन बढ़ा है? बढ़ा है जी। कितना आवागमन लगभग बढ़ा है? हाँ, कम से कम ये मानिए 100%। तो कितनी मूर्तियाँ, कितने श्रृंगार का सामान डेली निकल जाता है? कितने पैसे की आमदनी आपकी हो जाती है? देखिए, जितना ठाकुर जी दे दे इतना तो हम कह नहीं सकते, लेकिन ये है ठाकुर जी सुबह भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। दिन भर में 2000 भी आया, 3000 भी आया, जितना आया ठाकुर जी उसी में संतुष्टि करवाता है। तो बिल्कुल आप यहाँ सुन रहे थे, और भी कई दुकानदार मेरे साथ यहाँ हैं, तो बात करते हैं। और भी हैं मेरे साथ। जय श्री कृष्णा। आइए साहब, जय श्री क्या नाम है कृष्णा। आपका? हमारा नाम भीमसेन जैन है। जैन साहब जी। मंदिर को बने कितने दिन हो गए? मंदिर को बने तो बहुत समय हो गया, सन 84 से मंदिर बन रहा है। तो आप कितने दिन से यहाँ दुकान कर रहे हैं? हम सन 78 से दुकान कर रहे हैं। सन 78 से दुकान कर रहे हैं। कितना बदलाव यहाँ देखने को मिल रहा है? बहुत कुछ बदलाव मिल रहा है देखने को, बहुत कुछ बदलाव हुआ दिखा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत 90% बदलाव है। और व्यापार की अगर बात करें तो व्यापार में किस तरीके का उछाल यहाँ देखने को मिल रहा है? काफी अच्छा दिखा है। यात्री किस तरीके के यात्री आ रहे हैं? यात्री बहुत बड़ा है और व्यापार भी अच्छा बढ़ा है, पहले से बहुत अच्छा है। तो दिन में कितने का सामान आपके यहाँ से सेल हो जाती है? देखिए, ये टूरिस्ट दुकानदारी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है इतनी दुकानदारी हो जाए, लेकिन हमारे जितना खर्चा फुल मिलता है, हमें कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल। और भी कुछ यहाँ दुकानदार हैं, पूछते हैं। यहाँ ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो श्रृंगार भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल बिक्री करने का जो काम है, लगातार यहाँ दुकानें यहाँ सजी हुई हैं, आप देख रहे हैं। और भी कुछ भाई मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। भैया, क्या नाम है आपका? ब्रजेश शर्मा। बताइए। शर्मा जी, भगवान कृष्ण जन्मस्थान के समीप आप यहाँ शॉप कर रहे हैं, कितने दिन से आप दुकान चला रहे हैं? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो यात्रियों के अगर आवागमन की अगर बात की जाए तो पहले कितने यात्री यहाँ बढ़ा? काफ़ी यात्री हैं। जब से ये बनी है बीजेपी गवर्नमेंट, जब से बहुत ग्राफ बढ़ा है। भय भी अंदर नहीं है यात्रियों के, रात दिन घूम रहे हैं। अच्छा, तो अगर प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन के स्तर से किसी कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, सहयोग है प्रशासन में, कुछ नहीं। सहयोग मिलता है। तो यात्रियों की संख्या में लगातार आ रहे हैं, रोजाना आते हैं। पैसा कुछ नहीं है, पहले कम आते थे, संडे सैटरडे को ही आते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है, रोज ही संडे सैटरडे। व्यापार में कुछ नहीं, क्यों नहीं, जब यात्री आएंगे व्यापार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बिल्कुल आप यहाँ सुन रहे थे, व्यापारियों से लगातार हम न्यूज़ की टीम यहाँ पहुँची है और बात कर रही है। तो उन्होंने व्यापारियों ने बताया कि पहले से भय मुक्त, जब से बीजेपी का शासन आया, यात्रियों की संख्या में भी यहाँ मथुरा में इजाफा हुआ है। और जो व्यापार की अगर बात करें तो व्यापार में लगातार उछाल यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये मथुरा की तस्वीर है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान है। जन्मस्थान के बाहर जो आप देख रहे हैं, पूरा बाजार यहाँ सजा हुआ है। सामने मिठाई की भी दुकान है। यहाँ का प्रसिद्ध पेड़ा जो है वो यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है। पेड़ा की दुकान भी यहाँ भगवान श्री कृष्ण की नगरी में जन्मस्थान के सामने यहाँ सजी हुई हैं। अब बात करते हैं कुछ जो पेड़ा जो बेचने वाले जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? संजय अग्रवाल। अग्रवाल जी, कितने दिन से आप दुकान कर रहे हैं यहाँ? बहुत समय से कर रहे हैं। बहुत समय से दुकान कर रहे हैं। तो यात्री बात की जाए तो यात्री किस तरीके से यात्री आते हैं? यात्री संख्या क्या रहती है? रहती है
खूब भीड़ रहती है, व्यापार अच्छा चल रहा है। अच्छा, आशीर्वाद है आप लोगों का। बिल्कुल यार, और भी कुछ दुकानदार हैं, बात करेंगे। ये यहाँ यात्रियों के लिए ये खाने पीने की यहाँ पूरी व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार। यहाँ कितने दिन से दुकान कर रहे हैं आप? दुकानी अपनी है। अपनी है, कितने दिन हो गए यहाँ? 50 साल। 50 साल हो गए। यात्रियों पहले क्या कुछ यात्री बढ़ रहे हैं, कम हुए हैं? यात्री ठंड में नहीं भरे बजे आ रहे हैं। मंदिर से कितना लाभ मिल रहा है यहाँ? बहुत लाभ मिल रहा है। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे, जो व्यापार में मंदिर की अगर बात करें तो मंदिर से लगातार व्यापारियों को लाभ हो रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो लगातार मथुरा में बढ़ती जा रही है। वीर नारायण शर्मा, न्यूज़ मथुरा। So that, of course, was a special ground report filed by my colleague there from Mathura about the markets and, of course, the impact on local businesses around the temple complex. So that was a comprehensive segment on the Mathura story. We'll, of course, continue our special series right here on NewsX as a build-up to the big 22nd of January moment. For the time being, though, that's all the time and the content we could pack in for today's episode. Let's take a break.